Hello students, Assalamu alaikum everyone. So tomorrow is your exam. So best wishes from my side. अच्छा अब आप लोग बेटे मुझे बताएं किस किस चीज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम है ताकि उन प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व किया जा सके. So you can write down your problems here in the chat. Whatever your problems, कोई टॉपिक है जिसमें रिवीजन चाहिए आपको, so you can tell me. Okay. The first question is regarding alpha particles, like how they are used as a smoke detector. So smoke detector basically it is a device which is going to sense some smoke. So let's suppose if we have some smoke nearby. Smoke doesn't mean कि वहाँ पे fire होना ज़रूरी है. It should be like a dense situation. यहाँ पे we have like positive and negative plate, like there is an electric field which is set up, but the positive and negative particles cannot roam around, like between there is a gap. तो यहाँ पे आपके पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है. लेट्स सपोज इसमें से अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो निकल रहे हैं. सो द अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड. सो ये क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्मोक को आयनाइज कर देंगे. सो देयर इज अ चैनल मेड बिटवीन देम एंड दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प इन ऑर्डर टू क्रिएट द कंप्लीट सर्किट. बाय द वे यहाँ पे आपके पास एक अलार्म रेज होना चाहिए. सो देयर मस्ट बी एन अलार्म जो यहाँ पे रेज होगा when a channel or when a circuit is completely made. तो this is how the alpha particles जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं for the smoke detector. पेपर कैंसिल होने के चांसेस कम है because all schools are going to conduct their uh, exams like Cambridge exams as the way they are, because अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जिसके अंदर कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके कैंसिल हो जाए. सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड. आप कंप्लीटली प्रिपेयर होके जाएं. हाफ लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है. हाफ लाइफ के लिए लेट्स सपोज वी हैव अ ग्राफ और यहाँ पे आपको नंबर दिए हैं लाइक नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सो. अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है तो रेडियो एक्टिव डीके आपके पास ऐसे होगा. तो अगर यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स n थे, सो वो कितनी देर में पार्टिकल्स n/2 हो गए हैं. सो दैट टाइम इज नेम्ड एज हाफ लाइफ. तो जो हाफ लाइफ है वो बेसिकली टाइम है इन ऑर्डर टू मेक द इनिशियल काउंट रेट टू बिकम हाफ ऑफ देयर इनिशियल वैल्यू. अभी क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने आपसे क्या चीज़ मांगी है. हमारे पास बेसिक फार्मूला है NF अपॉन NI इक्वल्स 1/2 रेज टू द पावर n. इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स. तो अगर फर्ज करें कि हमारे पास इनिशियल काउंट रेट है 16,000 और 16,000 से ड्रॉप होके वो आ गया 1000 पे. सो कितनी हाफ लाइव्स वो गुजार चुका होगा. सो अगर हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, सो इट इज़ 1/16 1/2 रेज टू द पावर n और इट इज़ 1/2 रेज टू द पावर 4. बेसिस हमको सेम करनी है ताकि पावर्स हम कंपेयर कर सकें. तो मेरे पास 4 हाफ लाइव्स आ जाएंगी. दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स. देयर आर सम क्वेश्चंस. उन क्वेश्चंस के अंदर आपके पास ऑलरेडी
बैकग्राउंड रेडिएशन दी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, उसके अंदर बैकग्राउंड काउंट रेट जो है वो है लेट्स सपोज 50। तो आपको इस इनिशियल काउंट रेट में से, लाइक फॉर एग्जांपल इनिशियल काउंट रेट फॉर एग्जांपल 1000 था, तो इसमें से 50 माइनस करना पड़ेगा। देन आपको ये सारे फॉर्मुलेशन करके नंबर एन एफ निकालना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपके पास एन एफ की वैल्यू आ रही है 27। इसके अंदर यू हैव टू ऐड द बैकग्राउंड काउंट रेट अगेन। सो उन तमाम तर क्वेश्चंस के अंदर जहां पे आपके पास बैकग्राउंड काउंट रेट दिया होता है, तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड माइनस करना होता है, देन कैंसलेशन को पूरा सॉल्व करना होता है, उसके बाद फाइनली आपको बैकग्राउंड उसके अंदर दोबारा ऐड करना पड़ता है, ओनली फॉर दोज क्वेश्चंस जहां एग्जामिनर आपको कहेगा कि व्हाट वुड बी द फाइनल काउंट रेट आफ्टर द डिके। तो फाइनल काउंट रेट जो है वो मशीन के ऊपर आ रहा होता है, जिसके अंदर ऑलवेज बैकग्राउंड काउंट रेट रहता है। अब बैकग्राउंड काउंट रेट जो है वो कभी भी कम नहीं होता, लाइक वो हाफ नहीं होता। ये जो एक्चुअल काउंट रेट होता है किसी भी एलिमेंट का, वो रिड्यूस हो सकता है, लेकिन बैकग्राउंड काउंट रेट कम नहीं हो सकता। इसीलिए हम पहले इसको माइनस कर लेते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, फिर ऐड कर लेते हैं। सर इफ आई स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ, ए स्टार आ जाएगा जी? वह बिल्कुल जी आ जाएगा, बल्कि कल से करेंगे तब भी आ जाएगा। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, यहाँ पे है सजेस्ट विच रेडियो एक्टिव अल्फा एमिशन अल्फा बीटा और गामा इज सुटेबल फॉर डिटेक्टिंग द लीक्स इन द। तो इसके अंदर आपके पास गामा रेडिएशन जो हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली यूज़ की जाती है फॉर द पाइपलाइन लीकेज। पाइपलाइन लीकेज के अंदर इसको इसलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। सो इसको बेसिकली कैसे यूज़ करेंगे? इसको ऐसे यूज़ करेंगे कि जो हमारे पाइप्स हैं उसके अंदर हम इसको जो गैमा रेडियो एक्टिव सोर्स है इसको लिक्विड फॉर्म के अंदर हम रिलीज कर देंगे, और जब जिस पर्टिकुलर जगह से हमारे पास ये रेडिएशंस निकलेंगी, जहाँ पे क्रैक्स होंगे, तो वहाँ पे रेडिएशन डिटेक्टर लगा दिया जाएगा। लाइक फर्स्ट करें, दिस इज द पाइपलाइन, इसके अंदर हमारे पास कुछ क्रैक्स हैं। तो जब हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है इसके अंदर से पास करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द रेडियो एक्टिव मटीरियल, तो यहाँ से वो रेडिएशंस बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे आप टॉप पे एक डिटेक्टर लगा देंगे, ड्यू टू विच you can easily check how many radiations are coming. Wherever the number of radiations coming out of the pipe is the most, इसका मतलब है लीकेज जो है वो वहीं पे होगी आपके पास। अच्छा, उसके बाद बेटे क्वेश्चन आ रहा है, इज डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस? यस अली, आपका अगर लेट्स सपोज इफ वी हैव 2 पॉइंट्स, तो हमारे पास देयर आर 2 वेज, लाइक लेट्स सपोज दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ, तो ये हमारे पास डिस्टेंस है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्टेस्ट, तो यहाँ पे याद रखना है व्हेनेवर वी हैव टू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ, प्लस बेटा आपके पास इट इज़ द डायरेक्टेड पाथ। लाइक डायरेक्टेड का मतलब है ए से बी की तरफ, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है लाइक डायरेक्शन का। अगर स्ट्रेट पाथ होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे, बिकॉज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ पे इसलिए सेम होते हैं क्योंकि ये ही शॉर्टेस्ट पाथ है और ये ही टोटल पाथ है। तो जो डिस्टेंस है दैट इज द टोटल पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिगार्डिंग द जॉइंट्स। जो रेड जॉइंट होते हैं आपके पास, इसमें दो चीज़ें हैं आपके पास। एक होते हैं रेड जॉइंट्स जिनका जो साइज है दैट इज नियरली इक्वल टू द सन, या एटलीस्ट 2 से लेकर 8 टाइम। तो याद रखना है कि जो आपके पास रेड जॉइंट्स हैं, जो साइज ऑफ सन है, या तो वो उसका ट्वाइस होना चाहिए और इवन मैक्सिमम 8 टाइम्स। लाइक अगर फर्स्ट करें, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर साइज ऑफ सन जो है लेट्स सपोज वो है हमारे पास, एग्जांपल दे रहा हूँ 10⁶ किलोमीटर, तो उसका ट्वाइस या मैक्सिमम 8 टाइम्स होगा तो हम उसे रेड जाइंट कंसिडर करेंगे, और अगर इससे बड़ा होगा तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी रेड सुपर जाइंट। ठीक है, और जो कलर है वो बेसिकली टेम्परेचर को डिफाइन करता है।
यहाँ पे क्वेश्चन और आया हुआ है आपका ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म करता है किसको? वोल्टेज को और किसको? करंट को। तो अगर ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर का बेसिक पर्पस क्या है? वोल्टेज या करंट को अप डाउन करना। अब इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है, एक ये कॉइल होती है जिसके ऊपर हमने खुद से इनपुट देनी होती है। जो हमारी इनपुट वोल्टेज है उसको हम लोग प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं, जो हमारा इनपुट करंट है उसको हम प्राइमरी करंट कहते हैं। जिसमें से हमारे पास आउटपुट निकलेगी वो क्या होगी? हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज। जो हमारे पास करंट आएगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी करंट। जो मेरे पास इनपुट नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी टर्न्स, और जो मेरे पास आउटपुट नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी टर्न्स। अब अगर फर्स्ट करें हम इनपुट पे देखें तो इनपुट के ऊपर हम ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करने से आपके पास ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मल्टीपल टाइम्स वेरी करती है 1 सेकंड के अंदर। दिस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस द डायरेक्शन मल्टीपल टाइम्स इन 1 सेकंड। सॉफ्ट आयरन कोर का पर्पस क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए यूज किया जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेस्ट ना हो और आप इसको दूसरी साइड तक लेके इजीली जाएं। सो आपके पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इससे बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मुश्किल लगता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि राइट साइड पे आएगी। इससे आपके पास ई एम इंडक्शन होगी और आपके पास आउटपुट पे करंट आएगा। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप डाउन जिसमें आउटपुट वोल्टेज कम होती है, सेकेंडरी वोल्टेज कम होती है प्राइमरी से, और एक होता है आपके पास स्टेप अप जिसमें आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होती है प्राइमरी वोल्टेज से, और करंट ऑब्वियसली रिवर्स में होता है। तो अगर सेकेंडरी वोल्टेज कम थी तो सेकेंडरी करंट ज़्यादा होगा प्राइमरी से, और अगर सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा थी तो सेकेंडरी करंट कम होगा प्राइमरी से। अगर एक ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है तो आपकी पावर इनपुट और पावर आउटपुट बराबर होती है। फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, पावर प्राइमरी इज इक्वल टू पावर सेकेंडरी, वीपी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। और अगर एक ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट नहीं है, 90% एफिशिएंट है, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे कि जो आपकी सेकेंडरी पावर है वी एस आई एस इज इक्वल टू 90% ऑफ वी पी आई पी, और इस केस में यू वुड राइट 0.9 टाइम्स वी पी आई पी। दिस इज द वे। आप अगर 100% एफिशिएंट नहीं है तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना। हाउ इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज? जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज बेसिकली वो एनर्जी सोर्सेज हैं जो हॉट रॉक्स या जो आपके पास कोर है वहां से। तो हम बेसिकली डीप ड्रिलिंग करते हैं अर्थ के अंदर, और जहाँ पे हमारे पास हॉट रॉक्स होती हैं वी आर गोइंग टू पंप द कोल्ड वाटर इनटू इट। हॉट रॉक्स जो हैं वो क्या करेंगी कि इस कोल्ड वाटर को हीट करेंगी। लाइक यहाँ से कोल्ड वाटर जो है वो इन किया जाता है, और कोल्ड वाटर जो है इन हॉट रॉक्स में से होता हुआ स्टीम बन के बाहर आ जाता है। इस स्टीम को कंडेंसर के थ्रू या प्रेशराइज्ड स्टीम बनाई जाती है, प्रेशराइज्ड या प्रेशर डेवलप किया जाता है। उसके बाद इस प्रेशराइज्ड स्टीम को टरबाइन पे फॉल किया जाता है, और टरबाइन के बाद ये फिर क्या क्या करते हैं, इसको जनरेटर से, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोल्ड वाटर पंप करना है इनटू द हॉट रॉक्स। हॉट रॉक्स में से वो स्टीम बन के बाहर आएगा, उस स्टीम को हमने प्रेशराइज करना है। उस प्रेशराइज स्टीम को हमने टरबाइन के ऊपर फॉल करना है, टरबाइन रोटेट करेगी, उसकी रोटेशन से हमारे पास जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। सजेस्ट विच रेडियो एक्टिव एमिशन, ये मैं बता चुका हूँ ऊपर कि अल्फा जो है, गैमा जो है वो इस्तेमाल होता है डिटेक्शन इन द लीकेज ऑफ द वाटर पाइप्स। व्हाई द रेडियो एक्टिव आइसोटोप मस्ट नॉट हैव अ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। ये बात याद रखें कि किस पर्टिकुलर केस के अंदर रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ कम होनी चाहिए, किस में ज़्यादा होनी चाहिए। वो तमाम तर डिवाइसेस जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होती हैं, मतलब कोई ऐसी मशीन, या लेट सपोज हमने इसको यूज़ किया है स्मोक डिटेक्टर्स के अंदर, तो स्मोक डिटेक्टर के अंदर वही चीज़ यूज़ होगी जो कि लॉन्ग लाइफ होगी। फर्ज करें इसकी हाफ लाइफ जो 20 साल है या 15 साल है, 10 साल है, तो ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा हो। बिकॉज अब आपने अगर मशीन खरीद ली है किसी जगह लगाने के लिए, तो अब आप उसको डेली चेंज नहीं कर सकते।
अगर आपको मेडिकल डायग्नोसिस करना है, फर्स्ट करें कि कोई पेट स्कैनिंग करनी है आपको या एमआरआई वगैरह करनी है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको हाफ लाइफ ज़्यादा चाहिए होगी। किस केस के अंदर कम चाहिए? जो उन पर्टिकुलर केसेस में कम चाहिए, लाइक फर्ज करें कि वाटर लीकेज के लिए हमें चाहिए, तो हमने जब उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर इन करना है, तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी हाफ लाइफ कम हो। ऐसा ना हो कि लीकेज डिटेक्शन के सालों साल बाद तक वो रेडिएशन एमिट होती रहे और जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचता रहे। नंबर टू, वो तमाम तर केसेस जिसके अंदर बॉडी के अंदर, लाइक ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कैंसरस डिजीजेस, उस केस के अंदर भी आपकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और वो तमाम तर सिचुएशंस जिसके अंदर आप स्कूल या यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंटल पर्पज, उसमें भी हाफ लाइफ आपकी कम होनी चाहिए। सर प्लीज एक्सप्लेन द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो है वो आपके पास ये वाला लेंस है। लेंस चूंकि ट्रांसपेरेंट होता है, इसके दोनों साइड्स पे आपके पास फोकल पॉइंट होगा। फोकल पॉइंट जो है, दिस इज योर फोकल पॉइंट एफ। व्हेन द लाइट रेज आर फॉलिंग ऑन टू इट, तो याद रखना है कि आपका जो फोकल लेंथ है वो दोनों साइड्स पे है। तो हमने इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो हमारे पास कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के अंदर आपने राइट वाले फोकल से नहीं गुजारना है इसको, आपने इसको लेफ्ट वाले फोकल से गुजारना है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर यू हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ द स्केल। तो यहाँ से आपने डॉटेड लाइन लेकर आनी है, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद ये यहाँ से यूं जाएगी। सिमिलरली इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद बेटा ये यूं जाएगी। यहाँ से इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट वुड गो दिस वे, एंड ओवर हियर इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट वुड गो दिस वे। सो ये कॉनकेव लेंस है, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। How is the kinetic energy related to the thermal energy? Kinetic energy basically इस तरीके से thermal energy के साथ है। More specifically, you are talking about the internal energy. Internal energy basically, internal energy is equal to the sum of microscopic, kinetic and potential energies of the particles of the liquid, गैस और सॉलिड। अगर फर्ज करें हम बात करते हैं एक गैस की, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी वुड बी ट्रांसफॉर्म टू इंटरनल एनर्जी। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है ये बेसिकली दो काम कर सकती है। या ये बॉन्ड्स को तोड़ सकती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स हैं वो तो है ही सेपरेट, तो बॉन्ड्स को तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस केस के अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जीरो होगी, और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास मैक्सिमम होगी, क्योंकि सारी एनर्जी पार्टिकल्स की स्पीड को बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाएगी। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी वुड स्टार्ट टू इंक्रीज। कैन यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार प्रोसेस? ये मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ। How probable is space coming tomorrow and you can cover the main topics of the space? ये space मैं एंड पे कराऊंगा जी आज। Apart from the definition and free fall, suggest questions that would anything else come in igcse? Free fall and suggest questions that would, I'm not specifically getting this question. Explain the part of the definition. Like if you are specifically talking about the free fall, तो free fall के अंदर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में डिस्कस किया जा सकता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, तो उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन जो है वो 9.81 है। लाइक फर्स्ट करें यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास जीरो से स्टार्ट हो रही है, इवन देन एक्सेलरेशन इज 9.81, और उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि जब आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो वेट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसके ऊपर जब एयर रेजिस्टेंस ऐड करेगी, तो जब वेट और एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करेगा। तो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। याद रखें कि अगर एग्जामिनर ने फोर्सेस के रेफरेंस से मांगा तो फोर्सेस के रेफरेंस से आंसर करना है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जी वेट ऐड कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस ऐड करिए। अगर उसने थर्मल एनर्जी लॉसेस के फॉर्म में डिस्कस किया लाइक एनर्जी की टर्म्स में, तो आप कह सकते हैं कि जी हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। तो आप उसी फॉर्म में आंसर करेंगे तो आपको आंसर का मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। टेंशन आपने पूछा कि जी गॉट रिमूव, टेंशन स्पेसिफिकली कोई इस तरह नहीं है कि बिल्कुल निकल गया ये। लाइक फर्स्ट करें आपके पास एक क्वेश्चन है और आपको एग्जामिनर स्प्रिंग दे देता है, इस ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है, और ये जो है ना सीलिंग के साथ एक स्प्रिंग आपका अटैच्ड है यूं करके। आपसे कोई पूछे कि जी स्प्रिंग में टेंशन कितनी है, तो यू कैन सिंपली से 10 न्यूटन। अगर ये सिस्टम रेस्ट पे, तो टेंशन कहीं पे भी निकली नहीं है, ऑलवेज दे। एक्सपेरिमेंट विद पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स के पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये आपके पास के जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर बीइंग स्प्रिंकल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और इन वाटर पार्टिकल्स के जो सरफेस पार्टिकल्स हैं
लाइक ये जो pollen grains हैं, they are being sprinkled and they are under observation with the help of the microscope. और माइक्रोस्कोप से हम क्या चीज देखेंगे कि these pollen grains particles are being hit by the water particles. वजह ये है कि हम वाटर पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते, तो अगर हम उसको नहीं देख सकते तो हम इनडायरेक्टली अगर देखना चाहें तो हम किसको ऑब्जर्व करेंगे, पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन्स की अगर मोशन की बात करें तो इट वुड ऑल बी रैंडम, हमें नहीं पता कि किस वक्त उसकी क्या पार्टिकल की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये रैंडम पार्टिकल की जो डायरेक्शन है, दिस इज इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ द ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन वाज द साइंटिस्ट जिसने ये हमें जो है वो बताया था कि ये बेटे मोशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, विच इज हैफाजर्ड मोशन या रैंडम मोशन। तो आपने रैंडम मोशन ड्रॉ कर लेनी। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि ब्राउनियन मोशन आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स being hit by the water particles because they cannot be seen by the naked eye. सर कुछ ऐसा बता दें जो सीआई में आएगा। वेरी गुड। नो सर, आई एम आस्किंग what would come in the paper apart from the definitions and calculations. कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, लॉज की सारी डेफिनेशन जो है वो प्रॉपरली आप याद करें। लॉज इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ हो गया आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये डेफिनेशन जो हैं लॉज की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी डिजाइनिंग का शायद थर्मल वगैरह से रिलेटेड कुछ कंटेंट आपके पास आ सकता है। ब्राउनियन मोशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुरहान। जी हसान, जब एक ऑब्जेक्ट को आप हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती है उस वक्त तक जब तक कि उसकी काइनेटिक एनर्जी या स्पीड कांस्टेंट नहीं हो जाती। तो जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो फिर जीपीई वुड बी कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी ओनली, और जब ये ऑब्जेक्ट हिट करेगा ग्राउंड को तो दैट वुड ऑल बी कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी। हाउ टू कन्वर्ट केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, आप एक याद कर लें डिग्री सेल्सियस से केल्विन का। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आपने सिंपली 273 ऐड करना है, आप केल्विन में चले जाएंगे। और टेम्परेचर इन सेल्सियस चाहिए तो फिर ऑब्वियसली आप टेम्परेचर इन सेल्सियस को सब्जेक्ट बना लेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने कब कब लगाना है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने लगाना है डीसी मोटर में, अल्फा पार्टिकल के ऊपर, पॉजिटिव पार्टिकल के ऊपर, और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। और आपने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बेटा कहाँ पे लगाना है? आपने एसी जनरेटर के अंदर। उसके बाद आपने बीटा पार्टिकल के ऊपर लगाना है, नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर लगाना है, और इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर के ऊपर लगाना है। इंड्यूस्ड करंट और सिंपल करंट में फर्क ये होता है कि इंड्यूस्ड करंट वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से पैदा हो रहा होता है। ब्राउनियन मोशन फॉर स्मोक एंड एयर। जोहेब आपका क्वेश्चन है तो दोबारा इसको रीट्रेट करें, मैं ऊपर बता चुका हूँ। ऐसा थर्मल एनर्जी दैट इज ऑलवेज लॉस्ट। refraction, Bruce, be specific which type of refraction you are talking about. हम ना जब हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होता है तो हमारे पास जो इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है तो वी हैव टू ड्रिल एटलीस्ट 2 होल्स, या हम मैक्सिमम 3 होल्स इस तरह से ड्रिल कर सकते हैं। वी हैव टू हैंग इट ओवर द रिटॉर्ट स्टैंड। रिटॉर्ट स्टैंड के ऊपर करके यहाँ पे पिन लगा लेंगे, और पिन के आगे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक प्लम लाइन अटैच कर देनी है। प्लम लाइन अटैच करके यहाँ हमने क्रॉस लगाना है। उसके बाद वी हैव टू रिमूव दिस, और उसके बाद मल्टीपल प्रोसीजर हमने करना है। लाइक फर्स्ट करें वी आर डन विद दिस फर्स्ट, उसके बाद हमने इसको रोटेट कर लेना है, और रोटेट करके हमने न्यू पोजीशन करके इस तरह से क्रॉस और सिचुएशन डॉट्स वाली सिचुएशन क्रिएट करनी है, जहाँ पे हमारे पास डॉट्स और क्रॉस जो है वो बन जाएंगे। लाइक फर्स्ट करें कि हमारे पास पहले डॉट के रिस्पेक्टिव ये क्रॉस था, दूसरे डॉट के रिस्पेक्टिव ये क्रॉस था, तीसरे डॉट के रिस्पेक्टिव ये क्रॉस था। तो हम लोगों ने वी हैव टू ड्रॉ 3 लाइंस, wherever these 3 lines are going to intersect is basically the point जहाँ पे आपके पास center of gravity होना चाहिए। Particle size of the air and smoke। Particles जो air के जो particles हैं उनका जो size है
वो हमारे पास बहुत कम है, विच इज़ नॉट विजिबल टू द आई। और जो हमारे पास वो है स्मोक पार्टिकल है, दैट कैन बी सीन। ज़्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट करने के लिए जोहेब हम लोग लाइट सोर्स लगाते हैं। लाइट सोर्स का मतलब होता है इस फिनोमेना को प्रोमिनेंट करना। लाइट सोर्स कभी भी इसलिए यूज नहीं की जाती कि हम इसमें से थर्मल एनर्जीज को ट्रांसफर कर सकें। अतीब, मैं वर्किंग प्रिंसिपल ऊपर बता चुका हूँ कहाँ कहाँ पे लगने लॉस। जी बेटा। हाउ टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। अच्छा, शॉर्ट साइटेडनेस के केस के अंदर क्या होता है, अगर ये हमारी आई है और यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो शॉर्ट साइटेडनेस के केस में जो आपका इमेज बनेगा वो शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस होगा। ये देखें, ये डिस्टेंस आपके पास शॉर्ट है, शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस होगा। इस केस में आपने क्या करना है, आपने डाइवर्जिंग लेंस लगाना है। तो यहाँ से जो लाइट रेज जा रही हैं वो थोड़ा सा स्पैंड करेंगी। लाइक अगर फर्ज करें कि ये हमारे पास सिचुएशन थी यूं, तो ये लाइट रेज हमारी एक्सपैंड करेंगी, एक्सपैंड करके दे आर गोइंग टू मीट एग्जैक्टली ऑन द रेटिना। नाउ जिस जगह पे ये मीट करती हैं उसको रेटिना कहते हैं। अगर लाइट रेज एग्जैक्टली इस तरह करके मीट कर जाएंगी रेटिना के ऊपर, तो इसका मतलब है कि हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल करेक्ट बना है। ये है हमारे पास शॉर्ट या नियर साइटेडनेस। फार साइटेडनेस के अंदर क्या होगा कि जो हमारा आई इमेज है वो एग्जैक्टली पीछे जाके कहीं बन रहा होगा। तो रेटिना से कहीं बाहर नहीं बनता, लेकिन अगर हम इन लाइट रेज को मीट करवाते तो वो हो सकता है पीछे जा रही होती। तो इस केस के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं। ये नॉर्मली ओल्ड पीपल के अंदर होता है, जो नियर साइटेडनेस का केस हो, जो फार साइटेडनेस का केस होता है आपके पास। तो फार साइटेडनेस में दूर की चीज़ें नज़र आती हैं, नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आती प्रॉपरली। तो इस केस के अंदर आपके पास जो लाइट रेज हैं दे वुड एग्जैक्टली मीट ऑन टू द रेटिना। तो इस तरह से आपकी नियर और फार साइटेडनेस के इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होती है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो कम होती है। वोल्टेज और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे होते हैं। ठीक है बेटा। ब्रूस रिपल टैंक बनाने के लिए आपके पास आ सकता है। ओके, if we are talking about the step up transformer, the output voltage would be higher, and in the case of step up transformer the output voltage would be higher and input voltage would be smaller. In the case of step down transformer, output voltage would be smaller and input voltage would be higher, but it would be converse. Wherever the output voltage is higher, output current would be less. Wherever the input voltage is higher, the output current is less, and vice versa. So wherever the voltage is higher, the current would be less. Wherever the voltage is smaller, the current would be higher. So remember one thing, like wherever it is like rather step up or step down, we have to relate it with the help of the voltage. So if it is step up, means output voltage is higher. If it is step down, the output voltage is smaller. Yes. So this, okay. So it has nothing to do with the Ohm's law right now, and the reason is very strong here. The reason is like if we are going to provide like input voltage and input current to this particular coil. So what happens here? So let's suppose I applied 10 volts and 1 ampere here. So there is some magnetic field generated, and if this magnetic field is delivered on the secondary side, what happens? There is rate of change of magnetic flux. If it is a step up transformer, so what would happen in the case of step up transformer? There would be multiple number of turns here. So remember one thing, this is very important explanation. So in the case of this situation, this is step up, so output voltage like Vs would be higher than Vp. Why? The reason is because over here the number of turns are higher. If the number of turns are higher, which means length of the secondary wire is higher, which means the resistance of the secondary wire is higher.
because length and resistance are directly proportional. If the resistance is higher, it means the secondary current would be lower. If the secondary current is lower, fine, this is the justification for the step up transformer. How the voltage is concerned, now if the number of turns are higher, length of the wire is higher, the resistance of the wire is higher, and voltage is higher. Remember, voltage is directly proportional to the resistance and current is inversely proportional to the resistance. Hope I'm clear to your question. Welcome. Okay, how to draw a ripple tank? A ripple tank is basically a transparent base tray. Like this is a transparent base tray, and we have a light source at the top. Like this is the light source at the top. Over here we have a motor which is going to produce some vibration, and we have a striker. This striker strikes on the surface of the liquid, and it is going to produce some water waves at the top of it. Normally this question comes of around like 3 mark question. And over here we have a white sheet of paper, and on white sheet we have these lines. These are called wave fronts. These vertical lines are called wave fronts, and the difference between these wave fronts is called wavelength. This is a DC motor. This is transparent base tray. This is the light source. Whenever the question comes here, so we have to draw a label diagram. Like we have to label it. Like what is this part? What is this particular situation? Like whatever is the transparent base tray. This is basically a white sheet of paper. Fine. So fine. Okay, explain the potential divider. Potential means voltage. Voltage divider means like we had a huge voltage and it is divided among the multiple resistors in series. So these multiple resistors could be more than one number. Like for example, if I have the situation and I have taken the three resistors here, this is resistor 1, this is resistor 2, and this is resistor 3. So if we are talking about the potential divider, so overall the EMF would be divided among these three resistors in such a way like the bigger voltage would be going towards the bigger resistor. So voltage and resistance are directly proportional. So if we want V1, what would I do? It would be the one which is going to be determined. Like if I want to find the voltage across R1, I would write R1 in the numerator and rest of all the resistors in series in the denominator multiplied by EMF. Similarly, if I want to find the voltage across R2, then it would be R2 over R1 plus R2 plus R3 times EMF. And similar case goes to the V3. So V3 would be equal to R3 over R1 plus R2 plus R3 times EMF. But remember this thing, your answer must be in such a way like the EMF must not be greater than the sum of all these three. So V1 plus V2 plus V3 must all be equal to EMF, not more than that. What are the negative particles and what are the positive particles? Negative particles mean electron or negative beta. Positive particles mean a proton or an alpha particle. What so means there is mass proportionality? Yes. If examiner is talking about a particular situation, like for example in this particular situation examiner is talking about like draw an arrow in order to define the actual movement of the particles in the circuit. So we have to tell this thing like, and let's suppose examiner says like draw an arrow and label it with E if we want to define the electronic current. So this is electronic current, and C for the conventional current. So conventional current is the one due to the flow of the positive charges from positive to negative terminal, and this is due to the positive particle flow.
and electronic current is the one which is due to the flow of negative particles from negative to positive terminal of the battery or the cell. So actually the positive particles cannot move in the circuit. This is actually the negative particles which can move. So remember this thing, the negative particles can only move, positive particles cannot move. The factors affecting the specific heat capacity. Okay, what is specific heat capacity? Specific heat capacity is defined as the amount of thermal energy required to raise the temperature of an object through 1 degree rise. So C is equal to E upon m delta theta. So normally while calculation, we are not going to provide the heat through like burner or so. So we are going to provide electric heaters. So in this particular situation, the specific heat capacity would be equal to C is equal to VIT over m delta theta, where VIT is what? It is the electrical energy which is being transformed into thermal energy. So right now the specific heat capacity depends upon mainly the time, like how much, for how long time we have given to, because in these particular situations we have to insulate it. So if there is no insulation, the time of the heating would increase and it is going to affect the specific heat capacity. The voltage value is same throughout the experiment, the current value is same throughout the experiment, the mass is same throughout the experiment, and delta theta is our own choice because it is not going to impact any on the value of the specific heat capacity. So actually this is the time which can be altered by using or by not using the insulation material. So insulation material is normally named as lagging in this chapter. Lagging means insulation. Experiment to determine the specific heat capacity. So if we have a solid block and we want to find the specific heat capacity of this block, we have to first of all drill two holes. Like let's suppose this is a steel and I have to find the specific heat capacity of the steel, then we have to drill two holes in it. Out of one hole we are going to place a thermometer in one of the holes and an electric heater in the other hole. We have an ammeter here, voltmeter here, battery here, a switch to in order to control the circuit, and then the most important, we have to lag it, like we have to make an insulation around it in order to reduce the thermal losses. So insulation is very important. If there is no insulation, the specific heat capacity would be more than actual. Remember this thing, if there is no insulation, the specific heat capacity would be more than the actual. Then we have to switch this particular heater on for, like let's suppose, 10 minutes. The voltage is there, we can measure the voltage from here, current from here, the change in temperature with the help of the thermometer. Mass is already predetermined and we have to switch this particular mechanism on for instance 10 minutes, so we can easily find the specific heat capacity in this particular situation. Okay, so what is the difference between analog and digital meter? Analog is basically the one which is normally in the paper, and this is having an arrow onto it. So this is basically the analog one. Analog means like there is a needle. This is a pneumatic system in which the needle can move left or right. So it is not compulsory like analog is for big value. It has nothing to do with. Remember this thing. Digital can even measure hundred of ampere. It's fine, right? So this is not the situation like analog can measure only the bigger values. The digital can also measure the bigger values. So in the case of digital one, we have digits onto it, and in the case of analog, we have a needle. This is a pneumatic system in which the needle can move left and right. This is called analog, and right one is called digital. Zarak, I have no idea class kab tak chalegi unless the students have some questions. Any other questions? Types of thermometers. There is no need to memorize the types of thermometer. Only liquid in glass thermometer is included in your syllabus.
If someone asks you like the what are the uses of infrared radiations, so you can write an infrared thermometer. This is a type of thermometer which was used in the COVID days. Like you can measure the distance, measure the temperature of a body from a far distant place. So this is an infrared thermometer. Other than that, there is no need to memorize the types of thermometer. It is not a part of syllabus anymore. Star formation, I'll explain in a while, not right now. Just wait for a while because rest of the things are there. Centrifugal force is not a part of syllabus. The centripetal force is a part of syllabus. If someone asks you what is a centripetal force, so you can define like it is a type of force which keeps or which compels the object to move in a circle, that is called a centripetal force. So if we are talking about the centripetal force, so it is always directed towards the center of the circle, and it helps the object to bind within the circle. So remember this thing, this is always towards the center of the circle. Centrifugal force is not a part of syllabus. So if the object is moving in a circular path, so velocity is always tangent to this circle. Net force and net acceleration, like centripetal force and centripetal acceleration, are always directed towards the center of the circle, and velocity is always tangent to the circle. And what is a centrifugal force? Centrifugal force is basically a reactional force which is opposite to the centripetal force. Centripetal force is actually compelling the object to move in a circle, always directed inwards, and centrifugal force is the one which is directed outwards, but it is not a part of syllabus. Geiger-Miller tube is the device which is going to measure the number of radiations. So for example, this is a device. This is actually a counter examiner is not going to ask you about its construction, but I'm going to give a very quick detail about this. So for example, this is a device. This is called a GM tube or Geiger-Miller tube. Its positive terminal is attached with an anode, and this is highly positive, around 500 to 600 volts. And over here we have a resistor over here. And what is the purpose of this resistor? You will come to know in a while. That this is basically connected to a thing which is called counter. So whenever there is some radiation coming in, this is actually a ceramic material, mica. This mica window allows the radiations to enter into the region. So when these radiations get in, so this actually tube is actually filled with a noble gas. So noble gas is normally not reactive under the normal conditions, but if there is some radiation coming in, so what would happen? The ionization would take place. The electron would start rushing towards the anode, and a positive ion would start rushing towards the negative plate. So outer casing is considered to be negative at potential, and the anode is considered to be positive at potential. When this electron is accelerated towards the anode, it will encounter more atoms, and more electrons are start to be ejected out of it, and there is a peak generated. So this peak is called one count, and when this peak hits the anode, so one count is registered. So this one count is registered on this counter. So the more the radiation rate, more number of peaks, more the count rate reading is on the machine. Charging by induction is not a part of syllabus anymore. Okay, G. The question is how to calculate. Okay, fine. So in those questions, whenever we have the two vectors, for example, this is vector A and this is vector B. So only remember one thing at this particular time, because parallelogram method is quite easy, but the tip to tail method is much more easy, because in the previous years the examiner usually gives those questions which are actually not the 90-degree question, but now the examiner is going to make a 90-degree question. So that's why this method which I'm going to make you understand right now, it is basically the one which is the easiest one. So remember, this is called tip to tail method. So in this particular method, the tip of the first vector should be placed on the tail of the other one. Like for example, this is the tip and this is the tail of the other one. You can do it the other way around as well. Like for example, you are going to put the tip of the B exactly on the tail of the A. So you can do it this way as well. So if this is arranged in such a way, this is called a tip to tail manner. So in this particular situation, once they are arranged in a tip to tail manner,
we have to remember one thing, like we are not allowed to change the direction of this vector, we are not allowed to change the size of this vector. If you are going to change it, you are not going to get the right answer. So see, this, the method which I'm using is basically a very good method. This is called clock rule. So no need to worry if you are not aware about it so far, because if the vector a is downwards, so on the clock it is going downward, on b it is going rightwards. So both vectors are moving in an anti-clockwise direction. So if the both vectors are in the anti-clockwise direction, then the resultant must be in the clockwise direction, and this vector would go this way, and you would get to know the direction of the resultant. Now, similar situation here. Now, how do we find it here? If we are going to draw a circle, so B is rightwards, A is downwards, both are in the clockwise direction. Then the resultant must be in the opposite direction. This is what resultant in the opposite direction, like anti-clockwise direction. So if you see, these both directions are the same, they are both the same direction. So whatever the method you are using, rather you are going to put the tip on the b, or tip of the b on a, or tip of a on b, irrespective, your answer would be same. But if we had some values, an examiner has asked us to draw a scaled diagram. This was not a scale diagram. So in the case of scale diagram, let's suppose if vector a was 50 kilonewton and B is 40 kilonewton, then you have to draw a scale like force versus length. So if the force is 50 kilonewton, you will draw 5 centimeter vector. Like for example, this vector A should be of 5 centimeter in length, 40 kilonewton would be 4 centimeter in length. And then, like for example, this is the 4 centimeter, only 90 degrees vector would be included. Then you are done. Now you found the vector r. Like let's suppose we measure the r, and r is equal to, for example, it is 6.7 centimeter. So it means it would be equal to 67 kilonewton. So this is how we are going to find the resultant. Now we have to find the direction of the vector. Remember, direction is always defined with the help of the tail. So where is the tail? We are going to define the angle with respect to that. So this is angle, you can measure with the help of protractor, or with the help of sine, cos, or tan rule. You can easily measure this particular angle. How to use the left hand rule for alpha and beta particles? Let's suppose we have over here north pole and south pole, and alpha particle is about to pass through this particular situation this way. So we have to put the index finger of the left hand towards, like to the right side of the screen. Put the index finger of the left hand towards the right of the screen, like in this direction. Middle finger towards the screen. This is the middle finger. This is the index finger. Index finger, and this is the middle finger. And this is the thumb. So thumb would be acting vertically downward. So this is the force acting on the positive particle. So this is the force. Whenever you're going to write it on the paper, you would write towards the bottom of the page. You would write towards the bottom of the page. And this arrow, like alpha particle, is depicting what? Into the page. ये page के अंदर जा रहा है, and the force is going downwards. So if the particle was allowed to pass through the magnetic field, then it would go this way, right? So it would go towards the bottom of the page. And if we are going to draw, like if we are going to do it with the help of the negative particle, then you have to just make it the other way around as well. Like if you are given a question of beta particles, then suppose it is a alpha particle or positive particle, apply the positive for the apply the left hand rule for the positive or alpha particle. Whatever the direction you are getting, with the help of the left hand rule, for the negative or beta, just reverse it. If you are going to get the direction downwards, then for beta it would be upwards. If for alpha it is leftwards, then for beta it would be rightwards. So it would be opposite to that. Which angle we need to measure? The angle of the resultant with respect to its tail. Over here, this one.
and Chen. Did you get it? We have to define it with the help of the tail. But how do we know which one is tail? Fine. Okay, it's very easy. Again, I'm going to explain it again to you. Let's suppose this is one vector A, this is the other vector B. If this is the circle method, so vector A was downward, vector B is rightwards, then this is the direction of the resultant. So resultant would be from here to here. So this is the direction of the vector which is given by this particular circle rule. So circle rule says this way, which means this must be tail. Taha, alpha particles are going to ionize the air, and ionized air means like there would be positive and negative particles in between. So these positive and negative particles are going to create a between the between the positive and negative plate, and in this way the alarm is raised. This is how it works. Between the tail and the resultant, correct? Yes. Fine. Okay, there is a question, what is potentiometer? So potentiometer is very important thing here. What is potentiometer? It is a type of potential divider. So potentiometer is a type of variable resistor having three contacts, 1, 2, and 3. And we have a voltmeter here attached. So examiner normally asks us, like for example, this is A, this is B, this is C. So examiner says, what would happen if the contact C moves from A to B? So if the contact is moving from A to B, what would happen? Like this contact is moving away from A. So which means like the distance between A and C has increased now. So length between A and C has increased, resistance between A and C has increased, and voltage between A and C has increased. So what would happen to the voltage between B and C? That would decrease. The reason, because the sum of voltage between AC and sum of voltage between BC, that must be equal to EMF. So remember one thing, if VAC is increasing, the VBC must decrease, because we cannot go beyond the input voltage. Galvanometer is basically a sensitive material, a sensitive meter, which can easily detect detect the presence of voltage or current. Ammeter measures the current, voltmeter measures the voltage, potential difference or EMF, and galvanometer only detects the presence of rather voltage or current. It is just going to detect it by with the help of different procedures. We can measure it. That is not a part of syllabus. That is a part of matriculation or FSC syllabus, but this is not a part of our syllabus in GCE or igcse. DC motor and AC generator. DC motor is basically a device which converts electrical energy into mechanical energy, and alternating current generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. Right? Any other question? Gold leaf electroscope is basically a device which is going to tell us about rather a body that is brought closer to it, can be charged or not. It is not that much important, but if you want, I can explain this thing to you. So let's suppose we have a casing,
like a metallic, sorry, a jar, glass jar. At the top of it, we have a brass disc. If it is initially positively charged and a positive charge rod is brought closer to it, what would happen? The divergence of the leaves would increase. And for instance, if it was negatively charged, then what would happen? The divergence of the leaves would decrease. I don't think that this is that much important. It is very old stuff. I don't think that this can come in the paper. जोहेब गैल्वेनोमीटर मैंने अभी समझाया आप. It can detect the presence of voltage or current. Any other question? To gather a question, just excuse me for 1 minute. I have already talked about like when to use left hand rule and right hand rule whenever we are talking about the DC motor. For DC motor, alpha particle, positive particle, and force on a current carrying conductor. We would use Fleming's left hand rule and Fleming right hand rule for AC generator, beta particle, negative particle, and induced current in the conductor. You can take a screenshot. Any other question except star formation? Welcome. Any other question except star formation? We will discuss it at the end. Any question? You have to memorize the image properties. Not yet, Turhan. At the end, we will discuss. Remember one thing: whenever we are moving into shallow, like for example, this is a region. This is called a shallow region. Shallow means slow. S for shallow, S for slow. So whenever the waves enter into the shallow region, only then the speed and wavelength would decrease. The frequency would remain same. Remember one thing: when an object is placed at the focal length. अच्छा, यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ. Real
and inverted when the object distance is greater than focal length, and virtual and upright when the object distance is less than the focal length. So when an object is at focal point, the image is not formed, and when the object is less than the focal point, the image is formed exactly in such a way like it would be a magnified image. Yes, the frequency only changes when the source producing these waves is going to change its own speed of striking, or own speed of vibration. Only then the frequency would change. Otherwise, no. Any other question? Yes. Any other question? Okay. When let's talk about the star formation then. Okay, it is the process which takes millions of years or billions of years to be formed. G potentiometer. It's not potential meter. It's potentiometer. 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 Okay, what is star formation? So star formation actually starts from nebula. So nebula is basically the dust and uh, clouds of gases. So this is basically a situation in which we have dust, we have the multiple gases and dense clouds. So whenever there is some mass in the universe, so it is going to attract any other mass. So due to which, what happens? The gravitational pull initiates. So from the nebula, there is a thing which is called a protostar. Protostar is basically a type of star formation process in which, due to the density and due to the gravity, the particles are being pulled together. So when the particles are being pulled together, what happens? These particles are crowded together. So when these particles are crowded together and they are being pulled under the gravity, so they are passing through the dense gases. So due to which they are going to collide more often with the gas particles and with themselves as well. So when they are going to collide, so what happens? The temperature starts to increase. So when the temperature of these particles starts to increase, what happens? uh, the further initial temperature increase is going to create a new situation which is called a stable star, or basically the main sequence one. What happens in this? The nuclear fusion reaction take place because the temperature has increased so much. Like the temperature is the thing which is required in order to produce the fusion reaction. So when the fusion reaction takes place, in the case of stable star, the huge
temperature is going to make the smaller particles to fuse together. So when they are going to fuse together, they are going to produce the thermal energy, and the thermal energy is being thrown outwards. So when it is being thrown outwards, there is a gravitational pull which is pulling everything inwards, and the temperature is going to pull it outwards. When these two things are equal, this is called a situation which is called an equilibrium situation. Is that clear so far? So when the equilibrium condition is satisfied, now the next thing is like how the stars are going to create two different situations. Now there are two main situations, like if the mass of the star is equal to the sun, or if the mass of the star is more than the sun. If it is nearly equal to the sun, this is called a red giant star, and if it is more than the sun, this is called red supergiant. So this is red giant, and other one is red super giant. In the case of red giant, when the fusion reaction aggravates, what happens? The matter is being consumed, and the fusion reaction takes place more. And what happens? The further supply of the helium cuts off, due to which everything collapses inside, and which is going to produce an explosion. This is called a planetary nebula, which further cool down and it creates white dwarf, and further cools down and it creates black dwarf. In the case of the red supergiant, in the case of the red supergiant, when it becomes very hot, because its mass is very high, the amount of the matter present there is very high, then what happens? The difference between red giant and red supergiant further is what, like it can further increase the fusion reaction up to carbon, and this one increases the reaction up to barium, like iron. It cannot go beyond that. So in the case of iron, this is the stable state. And when no further fusion reaction takes place, it produces a gigantic explosion named as supernova. In the case of supernova, when it further cools down, there are two situations. One is called neutron star, and another one is called black hole. This is the whole procedure of the star formation. And the next question is the linear magnification in the syllabus? Yes, linear magnification is a part of syllabus. And what it is, if this is the focal point, and if the light rays pass this way, the image is formed here. So this is image height, this is object height. So linear magnification is denoted by capital M. So image height divided by object height, or you can also do it this way: image distance over object distance. So M is equal to image distance over object distance. Both ways you can find, you will get the right same answer. Okay, Ji. What is Big Bang and how do we prove it? Okay. So there is a thing which is called Doppler's effect. Doppler's effect or redshift. So everything in the universe is going away. This is called universe expansion. So if the universe is expanding, like everything is moving away, it means if we go back in the time, everything was initiated from a single point. Like this, everything started from initial a single point, but due to the Big Bang, it is continuously expanding. This is called a Big Bang. So Big Bang is basically a concept in which it is explained like everything came into being due to a gigantic explosion. And let's suppose we are somewhere here, and this is actually a star. This star is moving away from us. Because it is moving away from us, so because let's suppose this is a radiating star, it is producing some light because it is moving away from us.
So the radiations which are being emitted by it is the one which is basically an elongated version of the wavelength. So if an object is moving away from us, like for example, this is the situation. If the object is moving away from us, so its wavelength starts to increase. If this is going away, its wavelength starts to increase, and this is called redshift. So redshift is basically the one in which the wavelength, apparent wavelength, increases, and because it is a radiating star, it has some color, so its color turns from, for example, yellow to any other color and increases to red. This is called redshift. It might cool down further, and its wavelength further increase because the temperature, if we have the high temperature, it means we have high energy. High energy means smaller wavelength. So if we have low temperature, low energy, higher wavelength. So higher wavelength means if the wavelength increases further, like more than radio, it then falls into the category of microwave. This is called microwave, or simply background microwave radiation, or cosmic microwave background radiation as well. This is the evidence. Is that clear to you? If you have any other question, you may ask, please. Any question? Inkjet question. What is inkjet question? Can you please elaborate? What is inkjet? This is not a part of syllabus. These were the applications of electrostatics which have been removed around like 4 to 5 years ago now. This was a photocopy machine or inkjet printers. It is in the notes Quran. Just to be on a safer side, revise it. Potentiometer is basically this situation in which we have a single resistor of longer length, and in the case of potential divider, we have multiple resistors joined in series. This is a potential divider situation. Let me show you. This one is the potential divider thing, and whenever there is a one slider contact resistor, that is called a potentiometer.
Do we have any other question? Sorry, I can't suggest anything. The paper is unpredictable. Anything can come in the paper. This is not a like a literature paper. इसमें हम guess नहीं कर सकते. Sorry. Space is just 1/6 part of a syllabus. I I think the space thing cannot come more than like 12 or 13 marks out of 80. I don't expect like more than this. Any other question, boys and girls? You have to remember the key words. Wherever there is written explain, then you have to give the reasoning for that particular question. Uh, Fiber optics is basically used. Obviously, it uses the technique of total internal reflection, and maximum speed can be achieved by this. Yes, because it is total internal reflection, then yes, the energy lost would be minimum. If you have any other question, you may ask, please. Do you have any other question? You can ask, please. How do you do a test charge? Test charge is, Amna, the test charge is always a positive charge. So let's suppose if we have an electric field radially outwards. So if we have placed a test charge, so it is going to move away from a positive particle, and wherever it is being repelled is the direction of the electric field line. If we are having a negatively charged particle, and this is a test charge particle will start moving towards the negative one. And this is the direction of the motion of the positive test charge particle in the electric field of a negatively charged particle.
Do you guys have any other question? No question. Any other question? Okay, if you have no question, then we would stop it here. Okay, then I'm going to stop it here because we have no more questions. Best of luck for the exam. Do not leave any part of the question. Attempt all the questions. Read the question properly. Do not leave any question unattempted. Convert all the units in the paper. Memorize the prefixes and all that. So that is all then. So I would stop it here. Best of luck for your exam. Take care and Allah Hafiz.